Chaitanya Sai, please proceed with your question. Madam Speaker, I beg to ask state question number 141. Will the Minister of Railways be pleased to state clause A, the number of new broad gauge railway lines sanctioned in the last 2 years for backward and aspirational districts, and clause B, the present status of these projects? Okay, the Minister of Railway, please answer to the question. The proposal stands recommended and will be taken up this year. Priyansh Pathak, Madam, will the Minister of Rural Development state Clause A, houses completed under PMAYG this financial year, and Clause B, whether 100% geotagging is achieved? Minister of Rural Development, please answer. Madam Speaker, 1.42 crore houses completed so far this year. And yes, 100% geotagging with photographs and timestamps done. Scheme extended till March 2029 for difficult areas. Another question. Supplementary on extension for hilly areas. Already extended with additional funds. Okay. Question hour concludes. Minister may now lay papers on the table. Honorable members, we resume the seating. We now take up the main business of the day, discussion on National Education Policy 2020. Yugendra B, please proceed. Madam Speaker, I beg to move that this House to now discuss the status of implementation of the National Education Policy 2020 and the roadmap ahead. Madam Speaker, over the last 4.5 years, the National Education Policy 2020 has moved from vision to visible transformation. Today, India stands on the threshold of an educational resonance grounded in our civilizational ethos, strengthened by modern technology and driven by the aspirations of our youth. First, NEP's greatest contribution has been restoring pride in education through the mother tongue. Across states, foundational learning in Bharatiya languages has expanded through initiatives like Bharatiya Bhasha Pustak Scheme, providing digital Indian language books for school and higher education. This is not merely an educational reform, rather, and cultural correction. Madam Speaker, we have achieved major NEP milestones. Multiple entry exit, the National Academic Bank of Credit, NCRF, and the new curriculum and the credit framework have made education more flexible, modern, and student-centric. More than 3 crore students today study under this system that respect choice, mobility, and multidisciplinary learning. Our gross enrollment ratio continues to rise, supported by the extraordinary expansion of institutions in the last decades, universities up to 60%, colleges up to 21%, and 42 premier institutions like IITs, IIMs, IISERs, IITCs, NITs added since 2014. Female enrollment has grown by nearly 40% with major gains in STEM. Madam Speaker, the budget 2025 to 2026 has strengthened NEP's momentum with a great historic allocation of 1,28,650 crore, a 6.22% increase. The school education receives 78,572 crore, the highest ever. Allocation to IITs, NITs, central universities, and UGC have seen a sharp rise, reflecting a government that invests not in infrastructure but in future of every child. We are establishing 50,000 adult tinkering labs in government schools, ensuring every government secondary school becomes a hub of innovation. Broadband under BharatNet will connect all secondary schools in the next 3 years, ensuring digital equality for rural India. To strengthen research, 20,000 crores has been allocated for the private sector, driven R&D and innovation. 10,000 PM research fellowship in IITs and IISCs will nurture cutting-edge technological leadership. Madam Speaker, India's knowledge heritage is also safeguarded with the Gyan Bharatam mission, documenting over 1 crore manuscripts and the National Digital Repository System of Indian knowledge systems.
The roadmap ahead is clear: equity, equality, technology, skilling, and global competitiveness, all rooted in Bharatiya values. NEP 20 is not just an educational reform, it is the foundation of Viksit Bharat 2040 SA. Okay. Suhani Joshi. Madam Speaker, the National Education Policy 2020 is India's major education reform after 34 years. It aims to improve school education, higher education, and make learning skill based, flexible, and holistic. India will have the highest population of young people in the world over the next decade, and our ability to provide the educational opportunities to them will determine the future of our country. The Global Education Development Agenda, reflected in Goal 4 of Sustainable Development Goal adopted by India in 2015, seeks to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. There will be growing demand for humanities and arts as India moves towards becoming a developed country as well as among the three largest economies in the world. The new education policy must help re-establish teachers at all levels as the most respected and essential members of our society. It will also provide all students, irrespective of their places of residence, a quality education system with particular focus on historically marginalized, disadvantaged, and unrepresented groups. The policy envisaged that extend 10 plus 2 structure in school education, which will be modified to new restructuring 5 plus 3 plus 3 plus 4, covering ages 3 to 18 years. For universal access to education, Anganwadi centers will be strengthened with high quality infrastructure and well trained teachers. The digital infrastructure for knowledge sharing, Diksha portal, will help education access digitally. There are various initiatives which include Sarv Shiksha Abhiyan, open and distance learning program, which will be expanded. There will be fun activities including Ek Bharat Shresth Bharat initiative. In India's sign language will be standardized across the country. The National Education Policy 2020 has the potential to build an equitable, innovative, and globally competitive education system for India and a step towards Viksit Bharat by 2047. Thank you. Okay. Aman Mishra. माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद जब आपने मेरे को ये मौका दिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जैसे महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का। सबसे पहला कि सपनों का आजादी देने वाला भारत हम तभी बना पाएंगे जब शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। मैं एक संसद होने के तौर पे अपनी सरकार को समर्थन देता हूं और आगे की कार्यवाही करेंगे हम। तो पहला बिंदु था कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा जैसे बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। मातृभाषा जो कहीं ना कहीं अपनत्व का भाव देती है। अपने रीजनल लैंग्वेज में अगर हम अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए और कनेक्टिविटी बढ़ाती है। दूसरा, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ डिग्री नहीं, कौशल की शक्ति को भी बढ़ाती है। आज की दुनिया में कौशल की लड़ाई है लेकिन डिग्री की नहीं। मैं गर्व से कह सकता हूँ सरकार ने इस समय रहते इस मुख्य विषय को समझा। नेशनल एजुकेशन 2020 ने स्कूल से ही कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटरप्रेन्योरशिप और डिजाइन थिंकिंग जैसे कौशल अनिवार्य किए हैं। अब एक युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने के लिए नहीं जाना जाएगा, वो नौकरी देने के लिए भी जाना जाएगा। डिजिटल इंडिया एक महत्वपूर्ण बिंदु इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। अब शिक्षा सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, गरीब के लिए और सामान्य वर्ग के लिए भी होगा। पहली बार डिजिटल इंडिया को शिक्षा की इतनी गहराई से जोड़ा गया है, जहाँ पे दीक्षा पोर्टल, स्वयं और वर्चुअल लैब्स, डिजिटल लाइब्रेरी जैसे बिंदुओं को शामिल किया गया है। आज गांव का बच्चा भी उसी क्वालिटी के लेक्चर को देख सकता है जो बड़े शहरों और महंगे स्कूल में मिलते हैं। और
शोध, नवाचार और इनोवेशन भारत का रास्ता बन सकता है। मेरे ख्याल से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना यह दर्शाती है कि भारत अब उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और नवाचार का भी निर्माता बनेगा। वंस अगेन आई एम सपोर्टिंग माय गवर्नमेंट फॉर दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। थैंक यू। Okay, thank you. Bhumika, you may proceed. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर इस महत्वपूर्ण चर्चा में शासन पक्ष की ओर से अपना मत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक संरचनात्मक और आधुनिक परिवर्तन लाने वाली नीति है। इसका उद्देश्य केवल नई व्यवस्था बनाना ही नहीं, बल्कि शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। नीति का एक प्रमुख आधार है कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय भाषा में भी दी जानी चाहिए। अनुसंधान और व्यवहार यह है कि दोनों यह सिद्ध करते हैं कि बच्चे अपनी भाषा में अधिक ढंग से, प्रभावी ढंग से चीजों को सीखते हैं। इस दिशा में विभिन्न राज्यों में पाठ्य सामग्री, प्रशिक्षण और संसाधनों का विकास किया गया है। पारंपरिक 10+2 मॉडल की जगह मेरा आग्रह है कि एक व्यापक 5+3+3+4 का ढांचा लागू किया जाना चाहिए, जो बाल्यावस्था में ही एक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक सतत और संरचित सीखने को एक सुनिश्चित माध्यम बनता है। उच्च शिक्षा और विद्यालय शिक्षा दोनों में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 2020 के बाद से ही कई जिलों में नामांकन बढ़ा है, ड्रॉप आउट रेट कम हुए हैं और अधिक किशोर शिक्षा प्रणाली से जुड़े हैं। 2020 की एनएपी की पॉलिसी में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, अब विद्यार्थी अपनी सुविधा और परिस्थितियों के अनुसार किसी भी चरण पर प्रवेश या निकास ले सकते हैं, जैसे 1 वर्ष का सर्टिफिकेट, 2 वर्ष का डिप्लोमा, 3 से 4 वर्ष का डिग्री। साथ में ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जैसी प्रणाली ने शिक्षा के स्वरूप को और भी ज्यादा सरल कर दिया है। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपने अर्जित क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। यह सुविधा उन्हें विभिन्न संस्थानों से सीखने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, एक Please लचीला conclude. शैक्षणिक मार्ग बनता है। सरकार सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है, शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और भविष्य उन्मुख बनाना है। इस नीति के माध्यम से हम एक ज्ञान आधारित, सक्षम और प्रतिस्पर्धी राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। Okay. Now, Kirti Meghani, please proceed with your speech. Honorable Speaker, Everyone, ma'am. please stick to the time limit, okay? It's 2 minutes 30 seconds. Please be stick to that. Okay, you may proceed, Kirti. Honorable Speaker, ma'am, I rise today to strongly support and praise the National Education Policy, which marks a historic reform in India's education system. Ma'am, data clearly shows why this reform was necessary. Before NEP, India's gross enrollment ratio in higher education was around 26%, while the global average stood much higher. The National Education Policy aims to increase this GER to 50% by 2035, bringing millions of young Indians into the education system. Honorable Speaker, learning outcomes were also a serious concern. Various assessments showed that a large number of students in primary classes struggled with basic reading and numeracy skills. That primary that is why NEP's strong focus on foundation literacy and numeracy by grade 3 is a game changer. A strong foundation will directly improve dropout rates and long term academic performance.
Ma'am, this policy also promotes skill based and multidisciplinary education. As per reports, more than 65% of India's population is below the age of 35, but many lack job ready skills. By introducing vocational training from an early age and flexible subject choices, NEP prepares our youth for employment as well as entrepreneurship. The emphasis on digital education and technology is equally important. Initiatives like online learning platforms and virtual labs are expanding access, especially for students in rural and remote areas. Honorable Speaker, ma'am, the national education policy is not just a reform of textbooks, it is a reform of mindset. It combines data driven goals with India's values, languages, and culture. I wholeheartedly support this progressive policy and commend the government for investing in the future of our children and the future of India. Thank you, ma'am. Okay. Satyansh Pathak. Madam Speaker, I rise to highlight how the National Education Policy 2020 is revolutionizing India's education system, empowering youth, and building a Viksit Bharat. NEP 2020 is the first overhaul in 34 years, focusing on equitable, inclusive, and quality education. I would now list the key achievements. Multidisciplinary universities, over 150 institutions like IITs, IIMs, NITs now offer flexible programs. CUET, unified admissions for 90 plus universities, easing access for 1.8 crore students. Nipun Bharat, aiming for universal foundational literacy by 2027. 20 lakh plus teachers have been trained. Vocational skills. 50 lakh students to benefit from industry aligned training by 2025. Digital push. Swayam. Diksha platforms reaching 15 crore students. Now let's talk about Gender Inclusion Fund. 1,000 crore for girls and transgender students. Higher education institutions in aspiration districts. 1,000 plus new colleges boosting gross enrollment ratio from 26% that was in 2018 to 32% that is now by 2023. Ongoing implementation, NCRT rolling out competency-based textbooks by 2024 to 2025. Multilingual education, 10 plus states adopting mother tongue instructions. Blended learning, 10,000 plus schools adopting hybrid models. Addressing challenges, educational budget 1.12 lakh crore and 30% for national education policy. PM eVidya, one class, one channel TV for 200 plus channels reaching 15 crore students. National Education Policy 2020 is a movement. With collaboration, we'll achieve 100% gross enrollment ratio by 2030, make India a global educational hub, and script a Viksit Bharat. Ma'am, NEP 2020 is a pledge to transform education, empower dreams. I urge all MPs to champion this mission. Let's make India a Vishwaguru in every sense. Jai Hind, Jai Bharat. Okay. Rajesh Burman. माननीय अध्यक्ष महोदया जी और मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। आज मैं सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहती हूँ भारतीय जातीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की सबसे क्रांतिकारी दूरदर्शी और समावेशी शिक्षा नीति है। ये कोई साधारण नीति नहीं है, ये भारत की शिक्षा व्यवस्था की तीसरी जन्म है। पहला 1968 में, दूसरा 1986 में और अब 34 साल बाद 2020 में। जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तब हमने तय किया है कि हम दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यता होने के साथ साथ के सबसे युवा शिक्षा भी
जारी है, जिसके माध्यम से आज युवा पीढ़ी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक नैतिक विकास में रुकावट है। इसीलिए हमारी सरकार ने पुरानी शिक्षा प्रणाली को हटाकर आज हम नई शिक्षा प्रणाली को लाए हैं। 5+3+3+4 की इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हमने वर्तमान में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाए हैं। जैसे हम अब बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर विकसित देश जापान, जर्मनी, फ्रांस, चीन जैसा देश अगर मातृभाषा में उनके बच्चे पढ़ सकते हैं तो भारत के बच्चा क्यों नहीं। और ये गर्व की बात है, एक आत्मनिर्भर भारत की पहली सीढ़ी है। जब हम बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई की, बच्चों छठी कक्षा से वो वोकेशनल पढ़ाई भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उनकी जिस विषय रुचि है उसको कर सकते हैं। जैसे मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, सेवा उद्योग जैसे काम भी वो कर सकते हैं। ज्यादा बात करते हैं कि 21वीं सदी की जब टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में आई है और उसके माध्यम से अगर बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, किससे ऑनलाइन चीजों को उपयोग करें, इसके लिए हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमने ये अभूतपूर्व परिवर्तन लाए हैं। उसके साथ ही हमने बच्चे इसके साथ अगर वो चाहे तो क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से वो चीज़ों को समझे, पढ़े। और हम इसमें अगर आप देखेंगे तो हम ग्रेजुएशन लेवल पे हमने एक अभूतपूर्व परिवर्तन किया है, जिसके माध्यम से पहले हम देखते थे अगर कोई ग्रेजुएशन करने बाद कुछ कारणों की वजह से अगर वो पढ़ाई नहीं कर पाते आगे, उन्हें अगर वो फिर बाद में चाहे तो उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ती थी। अब हम इस शिक्षा नीति के माध्यम से री एंट्री की व्यवस्था भी हमने करी है, जिस माध्यम से उन्हें फिर से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ मैं इतना कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल एक नीति नहीं है, ये एक नया भारत का विजन है। एक ऐसा भारत जहाँ शिक्षा सुलभ, समावेशी और सशक्त हो। इन सुधारों के उद्देश्य सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना है। धन्यवाद। Okay, thank you. ख्यातिबा परमार. First of all, thanks to give me this opportunity, Speaker Ma'am. Today, I stand here to support our government for introducing the National Education Policy 2020, a policy grounded in data, scientific research, and a long-term vision for transforming India's educational landscape. The result of reforms in school education are becoming visible. According to recent national data, India's dropout rate have significantly declined. Today, dropout is only 1.9% at primary level, 5.2% at upper primary level, and 14.1% at secondary level. A steady improvement reflecting better retention, improved access, and government intervention through initiatives like NIPU and Bharat. NEP has set an ambitious milestone to achieve universal foundational literacy and numeracy by 2025, ensuring that no child is left behind. NEP 2020 also aims for 100% gross enrollment ratio in school education by 2030. At the higher education level, India is strengthening a GER of 50% by the year of 2035, up from 26.3% in 2018. To support this expansion, India plans to add 3.5 crore new seats in universities and colleges, one of the largest higher educational expansions in the world. Total higher education enrollment has already reached around 4.33 crore students in 2021-22. In higher education, NEP 2020 brings revolutionary changes like multiple entry and exit system, allowing students to leave after 1 year with a certificate, 2 years with a diploma, 3 years with a degree, or complete a 4-year research-based degree. This flexibility is supported by the Academic Bank of Credits, a digital credit scores that allows students to pause, continue, or even change institutions. Today, over 400 universities are already part of ABC, making mobility a reality for Indian students.
Digital learning has also expanded rapidly through platforms like Diksha, PM eVidya, and Swayam, while the National Education Technology Forum is guiding the future of edtech innovation in India. At the end, the National Education Policy 2020 is a scientifically designed, data backed blueprint for India's educational transformation. With declining dropout rates, rising gross enrollment ratio, globally improving universities, mother tongue based learning, flexible degree system, ABC, and new research oriented institutions, the Government Shantibha. of India has taken a historic step towards creating a skilled, confident, and globally competitive generation. Thank you. Okay. Chaitanya Sai. Madam Speaker, the ruling party started speaking about the national education policy. I appreciate the effect by changing the education system and the syllabi. But what I wanted to speak as an opposition member is the from beginning to the college level, the ECCE, Early Childhood Care and Education, which is the main basic for even the foreign countries also. But in our country, the early childhood care and education is ignored. Even in NEP also, it was the government is praising themselves that it was being implemented. But there are many implementation gaps. These early years are the main role. It shapes the future of the children. It cares and shapes the cognitive, physical, emotional, social development of the children. But it has been ignored, and very even the metropolitan cities like the Delhi, the implementation we can see the implementation gaps and everything. Apart from that, teachers and students are very ignored, and they are ignorant about their about this new education policy, and even children doesn't know what new education policy mean, and teachers are less trained. In new education policy there is a thing called 50 hours training of the teachers, but in reality the training is not sufficient, which I feel. And in the mid school age also there is a thing called vocational training, which helps in the which helps children from job seekers to job created themselves, but it is very inefficient. Even some of the government schools which as a opposition members we visited, but we found out that there is a lack of at least basic facility, and even they are very ignominious about the policy of new education which has been implemented. And we appreciate the thing called bilingual thing, teaching the students from their mother tongue itself. But when you go to the university level, the students from across India come to enroll in the central universities. But when they start speaking and start teaching in a mother tongue itself, it becoming a main issue for the other students from across India. Apart from that, there are no separate uh, rooms for the children who are for Hindi medium, and apart from who are students who only know the English medium. And even the children from Northeast India are being ignored in the new education policy, since they don't know about the Hindi much part. And when they enroll to the central university, the professors who are there, they mainly focusing on this Hindi students much. That is my personal opinion, not only me. And we as opposition, we got an hands-on experience related to this. And apart from that, we appreciate the ruling party for implementing this new education policy. But when you go and see in reality, we don't have an efficient and number of teacher for a new courses. Example, I'm going to take one of the central university. Let's take, we know the Please renowned conclude. central. Chaitanya Sai, you are exceeding your time. Please conclude. I think there should be closed implementation gap, and the government should take initiative to reassess the policy. Thank you. Okay. Suhani Joshi. I'm already done. Okay, you have done? Okay. Shobit Prakash. Hello, audible. Hello. Yes, you're audible. You may proceed. अच्छा.
सभापति महोदया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जैसा कि ये सदन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे डिस्कस कर रहा है, हमारा अपोजिशन दल इसका विरोध करता है, सिरे से नकारता है, और इसे हम दिल्ली की तरफ से तुगलकी फरमान बोलेंगे। अ, यहाँ पे बार बार स्ट्रगल एनईपी में है कि हम जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करेंगे, बट बड़ी खेद के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है सभापति महोदया कि बड़ी मुश्किल से हम 3% तक वहां तक स्पेंड कर पा रहे हैं। सभापति महोदया, नई नेशनल पॉलिसी में एक बहुत बड़ी कमी है कि उसे एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। बड़े बड़े उद्योग और उद्योगी घर एजुकेशन को अगर ओन करेंगे तो ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी समस्या मिल जाएगी, जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। और जो शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है कि सबको समान अवसर और तरक्की देना, वो कहीं ना कहीं विफल हो जाएगा। सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान इस पे लाना चाहता हूं कि जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, जैसे कि या टेक्निकल या स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं, उसको रीजनल लैंग्वेज के नाम पे उन रीजनल लैंग्वेज के नाम पे ट्रांसलेट किया जा रहा है, जबकि अगर हम उनमें एडमिशन लेने वाले बच्चों की बात करें तो वो बेहद ही कम है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि सरकार अपना उद्देश्य और अपनी जिद के आगे किसी की बात सुनना नहीं चाहती, जिसकी वजह से पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक पब्लिक टैक्सेस और पब्लिक फाइनेंस का वेस्ट होता है। सभापति महोदया, एजुकेशन पॉलिसी एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जिसमें सारे स्टेट्स की सहमति होनी चाहिए, जबकि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के टर्म्स को डिक्टेट करती है, ये सिर्फ रूलिंग पार्टी के टर्म्स को डिक्टेट करती है, और अपोजिशन के और जो स्टेज वाइड डाइवर्सिटी है उसको मान्यता नहीं, उसको उसको सुनने से नकारती है। सभापति महोदय, इसका एक सबसे खराब बात यह है कि अगर आप इस फरमान के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो जो स्टेट का अपना हक है, जो अपने फंड्स हैं, चाहे वो एजुकेशन या किसी और चीज के लिए एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो नहीं दिए जाएंगे। ये सरासर कॉर्पोरेट फेडरलिज्म के ऊपर हमला है। सभापति महोदया, मैं आपका ये बात तो टेक्निकल टर्म्स में ये भी कर सकते हैं, बट मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ जो आइडियोलॉजिकल वॉर करी जा रही है, जिसमें रूलिंग पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी, अपने उद्देश्य और अपने लोगों को प्रमोट करना चाह रही, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो किसी तरह का सिलेबस रिवीजन हो, चाहे कुछ भी हो। हम देश को विकसित बनाना चाहते हैं, हम देश के युवाओं को तार्किक क्षमता देना चाहते हैं, हम उन्हें किसी भी विचारधारा से बांधना नहीं चाहते हैं। वो सवाल करें, वो तर्क करें, वो समझें और वो फिर चुन लें कि इस देश के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सभापति महोदय, धन्यवाद। हम इसका विरोध करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तुगलकी फरमान है और कुछ नहीं। धन्यवाद। तो मैं Okay. So there is another thing is that if we see in the vocational educations, then another significant reform is the integrations of vocational educations into mainstream educations. Starting from grade 6, students will have the opportunity to learn vocational skills alongside their academic subjects. These initiatives aims to bridge the gap between education and employment, ensuring that the students job ready upon graduations also. If another thing is that if we see in the teacher training and development, the national education policy also emphasizes the importance of teacher training. It proposes the establishment of national missions for mentoring, which will provide support to teachers through mentorship programs. The aim is to enhance teaching quality and ensure that educators as well equipped to deliver high quality educations. And another important thing is that technology integrations in an increasingly digital world. A national education policy in 2022 recognizes the role of technology in education. It encourages the use of digital tools and resources to enhance learning experience. The policy also aims to create National Education Technology Forum (NETF) to facilitate the integrations of technology in all levels of education. And another most important thing is that we see focus on regional languages and culture. Lastly, National Education Policy 2022 emphasized the importance of preserving our rich culture heritage by promoting regional language
and also local knowledge systems. It encourages schools to teach in regional languages until at least grade 5, fostering a sense of identity among students. If we at the end of the national education policy in 2022 is not just a policy, it's a vision for a new India, an India where education is accessible, inclusive, and empowering. These reforms aims to nurture well-rounded individuals equipped with the skills needed for an ever-changing world. As we embrace these changes, let us work together build an educational ecosystems that inspire creativity, critical thinking, and lifelong learning. Thank you, ma'am. So before we rise, I have received a notice of breach of privilege. Madam Speaker, I rise to bring to your notice a very serious breach of privilege and contempt of the House. More than 5 honorable members have remained continuously absent for the last 12 sittings without any prior permission or intimation. This violates Rule 193 and lowers the dignity of the House. I lay the attendance extracts on the table and request you to refer the matter to the Committee of Privileges. So I have heard both sides. Prima facie, the matter is serious. I admit the breach of privilege notice and refer it to the Committee of Privilege. The committee is directed to submit its report within 3 weeks. The House stands adjourned to meet again tomorrow at 7:30. Thank you.